Ladies and gentlemen, good day and welcome to Surya Roshni Limited Q3 FY24 earnings conference call. This conference call may contain certain forward-looking statements about the company which are based on beliefs, opinions and expectation of the company as on date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant line will be in listen-only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Raju Bista, Managing Director of Surya Roshni Limited. Thank you and over to you, sir. Hi everyone, thank you. Good evening once again with the Q3 FY earning call. And on behalf of Surya Roshni Limited, I extend a warm welcome to everyone for joining us today. On this call, we are joined by Mr. Naresh Singhal, Executive Director, Steel Operation, Mr. Gaurav Jain, Chief Operating Officer, Steel Operations, Mr. Jitendra Agrawal, CEO, Lighting and Consumer Durable, and our CFO and Company Secretary, Mr. B.D. Singhal, and SJ, our Investor Relation Advisor. I hope everyone had an opportunity to go through the financial results, press release and investor presentation, which have been uploaded on the stock exchange as well as on our company website. Moving on to the highlights for the Q3 FY earning, the company revenue experienced a slight dip on account of slowdown of demand on the basically high value-added product in steel pipes business and flattish growth in lighting and consumer durable segment. Despite a slight decrease in revenue, the company managed to sustain its operating profit margin on account of substantial improvement in the operating margin, mainly in the lighting and consumer durable business. And the company recorded an EBITDA margins of 8.2% for the quarter, up by 87 basis points as compared to 7.3% for Q2 FY24. Over the past few years, company has placed its emphasis on focus on reducing the debt. During 9 months of FY24, the debt reduced by another 168 crore, and the debt to equity ratio is at 0.12 as on 31st December 2023. Lighting and consumer durable business is now completely debt-free. The segment has no long-term and no any working capital borrowing as on debt. We become totally debt-free company in the Q4 FY24, which means 1 year ahead of our target. Now coming to the lighting and consumer durable, the segment recorded a revenue of 403 crore in FY24 Q3, up by 2% as compared to the same period last year. The professional lighting business witnessed higher double-digit growth, while the consumer lighting business had a modest single-digit growth, and consumer durable and appliances segment witnessed almost a flattish kind of growth. Strong growth in volume, along with a better mix towards higher margin product and cost saving from backward integration, driven by PLI, production link incentive, contributed to a significant improvement in operating profitability. And also the gas price has also added to it because the gas prices has come down significantly. EBITDA for Q3 FY24 was up by 38% to rupees 38 crore as compared to 27 crore in the same quarter of FY23. EBITDA margin for Q3 stood at 9.3%, up by 244 basis points as against 6.9% in Q3 of FY23.
In professional lighting, we undertook a few big and important projects like G20 events and facade lighting of Atal Setu, etc. We also recently won a major order of like 75 crore for LED public street lighting and maintenance work in the state of Odisha. We have been witnessing robust growth in infrastructure lighting, facade lighting, and other industrial lighting projects. For the consumer durable segment, the overall sales has been subdued due to muted consumer demands. However, the premium category consumer durable product category has recorded decent growth. Fan as a category is currently seeing unique challenges due to regulatory interruptions such as implementation of mandatory star labeling requirements. However, the market acceptability of star labeling fan is finding good traction, and we plan to continue launching new product of star category. So, adding to it, we also conducted over 150 engagement with dealer in this Q3 quarter, thereby engaging with almost 10,000 of top retail outlet in different parts of our country. Also, similarly, we keep engaging with prominent electricians. So now, moving on to the steel and strip business, there was a slight decline in the top line growth, primarily due to the slowdown in demand of high value added, mainly the spiral parts in pipe segment. However, this was partially offset by improved sales in all other categories of pipes. So there was also 23% growth in export in the Q3 as compared to the same quarter last year. Overall, the steel pipe segment witnessed a volume degrowth of about 2.5% only in Q3 FY24. And the overall 9-month growth is about 7%. We have strong in-hand order book of about rupees 600 crore for mainly oil and gas segment. Sequentially, there was an improvement in steel prices. EBITDA per ton for the quarter stood at 6,156 rupees per ton, achieving a growth of 21% from Q2 FY24, which means previous quarter. And that was, I think, 5,104 crores rupees. So we are the first Indian company to manufacture 0.5 inches pipe to 140 inches pipes, minimum to maximum. We have recently received EPD Environmental Product Declaration Certification for all products, which is mandatory requirement for the customer, mainly in export market. We are expecting robust order from Saudi and Middle East and Canada markets in future. We have also ordered new spiral pipe unit at our Gwalior plant facility, and we manufacture a pipe up to 140-inch diameter. Earlier it was 104-inch only at Anjar plant. We further plan to add new coating plant in Anjar, Gujarat. So we are also currently in process to modernize our cold rolling plant at Badukar facility, which will be completed in next H2 FY25. And the other ongoing project will complete as per the schedule. This will result in substantial fall, reduce in cost of production as well as improving the quality of our products. Lastly, we remain confident about the opportunity that lies ahead of us. The company is focusing on geographical expansion, innovation, and efficient enhancement, infrastructure, and human capital to deliver the best world-class solution to our customers. Now, I would like to request our CFO, Mr. B.B. Singhal, to share his thoughts on financial parts. Thank you, respected MD, sir, and a very good evening to all participants on the call. For the quarter, the revenue was 1,938 crore as compared to 2,021 crore
Q3 FY24 EBITDA and PAT stood at rupees 158 crore and rupees 90 crore as compared to rupees 164 crore and rupees 90 crore respectively for the same period last year. For 9 months of this financial year, the revenue was rupees 5,729 crore as compared to rupees 5,845 crore. EBITDA stood at rupees 414 crore, up by 13%, as compared to rupees 366 crore in 9 months of financial year 23. And PAT stood at rupees 225 crore, up by 25%, as compared to rupees 180 crore. The increase in operating performance can be attributed to the PLI scheme, backward integration, and the increased demand for value-added products. In lighting and consumer durables for the quarter, the revenue stood at rupees 403 crore as against rupees 396 crore, registering a modest growth of 2%. EBITDA and PBT stood at rupees 38 crore and 30 crore, registering a growth of 38% and 56% respectively. For the 9 months, the revenue stood at rupees 1,154 crore as against 1,114 crore, a growth of 4% year-on-year basis. EBITDA and PBT stood at rupees 106 crore and rupees 83 crore, a growth of 50% and 50% respectively. In the steel pipe and strips, during Q3 FY24, the revenue was rupees 1,536 crore as compared to 1,626 crore. Similarly, EBITDA per metric ton stood at 6,156 rupees compared to 6,733 year-on-year basis and 6,156 in Q2 FY24. PBT stood at rupees 91 crore as against rupees 104 crore last year. For 9 months FY24, the revenue stood at rupees 4,577 crore as compared to 4,731 crore. Similarly, EBITDA per metric ton stood at 5,224 rupees compared to rupees 5,190 year-on-year basis, while EBITDA and PBT grew by 8% and 18% year-on-year basis to rupees 308 crore and rupees 222 crore respectively. Improved capacity utilization, working capital optimization, and cost rationalization has further reduced the debt by 160 crore. As of 31st December 23, the debt to equity ratio stood at 0.12. As on 31st December 23, ROCE improved by 271 basis points and stood at 22.91% as compared to 20.20% as on 30th September 23. Return on equity ROE stood at 17.88% as compared to 15.57% as on 30th September 23, registering a growth of 231 basis points. As on 31st December 23, the net working capital days stood at 70 days, inventory days stood at 50 days, debtor days stood at 36 days, and creditor days stood at 16 days. With this, I conclude the presentation and we can now open the floor for further questions and answers. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touch-tone telephone. If you wish to remove yourself from question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handset while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Jatin Damania from Swan Investment Managers. Please go ahead. Good evening, sir, and thank you for the opportunity. Congrats for a good set of numbers compared to the industry peers. Sir, just wanted to understand, in your opening remarks, you highlighted that the volume growth was only 2% in the quarter, while there was a decline in the value-added products. But at the same time, we had seen a sharp jump in the EBITDA per ton as compared to what peers have reported. So what has
drive the sharp improvement in our performance? जतिन जी, थैंक यू वेरी मच। इसमें दो चीज है। ये हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के हमारी दो कैटेगरी है, एक ERW सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं और दूसरा स्पाइरल सेगमेंट। सो ERW सेगमेंट के अंदर में तो ग्रोथ है, लेकिन जो स्पाइरल सेगमेंट है उसमें 38% की डी ग्रोथ है। वो मेन रीजन है और उसकी वजह से जो है उसमें रेवेन्यू में ग्रोथ कम है, क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में उसमें अच्छा वॉल्यूम गया था। बाकी ओवरऑल जो है हमने अपना EBITDA पर टन को जो है मतलब इम्प्रूव किया है। जो हमारी लास्ट टाइम की गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से जो है हमने उसको मेंटेन किया। उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है इस क्वार्टर में एक्सपोर्ट का रहा है, जिसमें करीब 25% की ग्रोथ है। तो एक्सपोर्ट में सर, एक्सपोर्ट का वॉल्यूम बता सकते हैं और उसमें EBITDA पर टन कितना रहेगा? एक्सपोर्ट के अंदर में जो है हमारा ओवरऑल परसेंटेज कम में देखेंगे 18 से 20% का हमारा टोटल जो है स्टील सेगमेंट का 18 से 20% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। और जो है EBITDA पर टन जो है मैं बहुत स्पेसिफिक नंबर तो नहीं बताऊंगा, बट फिर भी जो है डोमेस्टिक के कंपैरिजन में बेटर आते हैं। 9,000 से 10,000 रुपए पर टन EBITDA के आसपास रहता है। तो जैसे ओवरऑल आपने 6,100 कुछ देखा, तो उसके कंपैरिजन में 9 से 10,000 की रेंज में जो है एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन रहता है। ओके, बट सर सो अगर हम एक्सपोर्ट 25% हमने ग्रोथ किया एंड डेफिनेटली Q4 में भी थोड़ा बहुत रहेगा, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले स्लोडाउन दिख रही है या आर EBITDA पर टन कंटिन्यू टू रिमेन इन द सेम रेंज और यहाँ से इम्प्रूव होने के चांसेस ज्यादा है? एक तो क्या है, देश बहुत बड़ा है और हमारी आबादी डेमोग्राफी ये हमारी ताकत है। और ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस कुछ आते रहते हैं, चाहे वो कभी कोविड के नाम से हो, यूक्रेन रशिया के नाम से हो, बट फिर भी क्योंकि हम धंधे में हैं तो हमारा काम है अपना गाड़ी का रास्ता ढूंढना। तो आने वाले समय में मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूँ, फोर्थ क्वार्टर हालांकि पिछले साल बहुत सब्सटेंशियली अच्छे नंबर्स आए थे, उसके बावजूद भी जो है हम लोग इस बार कोशिश करेंगे कि हमारा पर टन EBITDA जो है जो Q3 में आपने देखा उससे बेटर रहेगा। और ओवरऑल हमने लास्ट ईयर कॉल में भी गाइडलाइन यही दिया था कि मतलब 5500 से 5600 के आसपास पर टन EBITDA हमारा एनुअल बेसिस पे रहेगा। सो 6,000 से ज्यादा करीब 6500 के आसपास का EBITDA मार्जिन रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम फरवरी महीने में इंटर कर चुके। तो उसमें ग्रोथ भी रहेगा और करीब 10% की ग्रोथ Q4 क्वार्टर में वॉल्यूम टर्म्स में रहेगा और EBITDA जो है 6500 रुपए के आसपास हम टारगेट करके चल रहे हैं। और अगले साल हम 1 मिलियन टन वॉल्यूम का गाइडेंस दे रहे हैं ना सर? अगले साल का मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगले साल दो चीज होने वाली है। एक तो हमारी कुछ कैपेसिटी जो है इनहांस हुई है, कुछ प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हुए हैं, कुछ प्रोसेस पे है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कंपनी की हम लोग स्टील डिवीजन के अंदर में 15% की ग्रोथ करेंगे। और लाइटिंग डिवीजन के अंदर में भी अच्छी बात यह है कि इस साल लाइटिंग डिवीजन के अंदर में हमने करीब 20% से हमारे रेवेन्यू जानबूझ के स्कीम का हमने उसको प्राइसिंग का हिस्सा बना दिया। वॉल्यूम में अच्छी ग्रोथ है, उसके बावजूद भी हम डी ग्रोथ पे अभी तक नहीं गए, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट एडवांटेज हमको अभी मिल रहा है। सो नेक्स्ट ईयर हम लोग 15% से ऊपर का एक्सपेक्टेशन लाइटिंग डिवीजन में भी करते हैं। सो मुझे लगता है हमारी 9,500 से 10,000 रेंज की साइज की कंपनी नेक्स्ट ईयर सूर्य रोशनी बनेगी। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया, स्लाइटली मैंने अभी टच किया, हम लोग डेट फ्री जो है 1 साल पहले ही हो रहे हैं एडवांस में। और एज ऑन टुडे हमारे पास क्योंकि 25 करोड़ रुपए का लोन बचा हुआ है, इसलिए मैं डेट फ्री अनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, जो इस क्वार्टर में इजीली हो जाएगा। सर अगर हम ये देख रहे हैं कि डेट फ्री ना टर्म लोन रहेगा ना वर्किंग कैपिटल रहेगी,
और इतने सारे कैपेक्स किए, इतना टर्नओवर में, रेवेन्यू में ग्रोथ रही, उसके बावजूद भी हम लोग उसको अच्छे से मैनेज कर पाए। राइट, बट सर अगर हम ये देखें कि वी आर ऑलमोस्ट डेट फ्री, हमारे 25 करोड़ की डेट है जो हम लोग ये क्वार्टर में डेट फ्री हो जाएंगे। लाइटिंग बिजनेस भी अभी अगले साल करीबन करीब 1700-1800 करोड़ का रेवेन्यू कर लेगा। स्टील बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है। बट सर अगर हम वैल्यूएशन में देखें तो बिकॉज ऑफ द कंग्लोमरेट दो बिजनेस हमारा साथ होने के बावजूद वी आर गेटिंग अ लोअर मल्टीपल, डिस्पाइट कि हमारा एबिटा पर टन बाकी पीएस से अच्छा है, लाइटिंग बिजनेस इंप्रूव हो रही है, डेट फ्री स्टेटस है। तो क्या बोर्ड ये सोच रही है कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, अभी भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, बट दोनों कंपनी साथ में मिलके अगर वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है तो डीमर्जर के बारे में कुछ कंपनी का कोई सुझाव बोर्ड का? चाहे डीमर्जर के बाद तो फिर आपको कोई इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं। सो आपको खुद को ही पता है कि आज तो जो है वो अट्रैक्टिव प्राइस में सूर्य रोशनी मिल रही है। मतलब इसमें देखिए सीधा सीधा जब तक कोई बोर्ड डिसीजन नहीं ले सकता, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर मैं ये कोई घोषणा कॉल में नहीं कर सकता, बट मुझे लगता है अप्रोप्रिएट टाइम पे बोर्ड इस पे जरूर विचार करेगा। जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, एक टाइम बहुत डेट बहुत ज्यादा होता था, तो उसको हमने सक्सेसफुली किया। अब हमारे पास प्रोजेक्ट करने के लिए भी जितना पैसा चाहिए उससे ज्यादा हमारे फंड जनरेट हो रहे हैं। सो ऑब्वियसली डिविडेंड और बाकी कॉर्पोरेट एक्शन से हम ये चाहेंगे कि शेयर होल्डर को इसका एडवांटेज मिले। नहीं सर, आपकी वो बात सही है, बट सर अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो हमने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बात की थी, बिकॉज ऑफ द गोल्डन जुबली ईयर देयर विल बी अ ह्यूज रिवॉर्ड फॉर द शेयर होल्डर्स, बट हमने अभी खाली ₹2.5 डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड दिया है। सो मतलब आई जस्ट थिंकिंग कि अगर आप बोर्ड के हिसाब से भी देख रहे हो या एमडी के हिसाब से, अगर डीमर्जर हो जाता है तो सर वैल्यू अनलॉकिंग के लिए शेयर होल्डर और मतलब बोर्ड के लिए भी एक अच्छा सा सुझाव हो सकता है इन टर्म्स ऑफ दी रिवॉर्डिंग टू शेयर होल्डर्स। हमने बोर्ड को ये विषय रखते भी हैं, डिस्कशन भी होता है। जब तक कोई कंक्रीट नहीं होता तब तक अभी बोलना उचित नहीं है, बट आपकी बात एकदम ठीक है कि साफ दिखता है कि वैल्यू क्रिएशन हो सकती है, तो फिर उसमें जो है मतलब बोतल ने कहाँ पे। सर थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, आई विल कम बैक इन अ क्यू। Thank you. A reminder to all participants, you may press star and 1 to ask questions. A reminder to all participants, you may press star and 1 to ask questions. Next question is from the line of Vikas Singh from Phillip Capital. Please go ahead. Good afternoon, sir. सर मेरा क्वेश्चन अगेन प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन पे, आपने कहा कि आपका स्पाइरल का वॉल्यूम ऑलमोस्ट 36% डाउन था, बट वही आपका सबसे बेस्ट मार्जिन बिजनेस है। तो जस्ट अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि अपने इवन इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने 1000 रुपए ज्यादा एबिटा पर टन बनाए हैं, तो उसका मेन रीजन क्या है? नहीं, उसको बेस्ट प्रोडक्ट का ही वॉल्यूम गिरा है। नहीं, उसको मैंने बताया ना, उसको ऐसा है कि हमारे देखिए दो तरह की कैटेगरी ऑयल एंड गैस में भी, एक स्पाइरल सेगमेंट है, एक ईआरडब्ल्यू सेगमेंट है। तो ईआरडब्ल्यू सेगमेंट में हमारी जो है ग्रोथ है और दूसरा एक्सपोर्ट सेगमेंट में ग्रोथ है। इसलिए जो स्पाइरल जो पिछले क्वार्टर में सब्सटेंशियल जिसका एडवांटेज हमको मिला था, जिसकी वजह से हम लोग 6500 से पार चले गए थे EBITDA, तो वो हमारे को इस बार डी ग्रोथ थी। अदरवाइज हमने उसको जो है मतलब जो प्रीवियस क्वार्टर से 5000 रुपए से 6000 करने में हमको एडवांटेज मिला है ईआरडब्ल्यू एपीआई ऑयल एंड गैस सेगमेंट से और एक्सपोर्ट सेगमेंट से। ठीक है सर। और सर अपना सस्टेनेबल लेवल पे आप एबिटा पर टन क्या देखते हो कि आपके जो प्रोडक्ट मिक्स है उसके हिसाब से आपका सस्टेनेबल एबिटा पर टन कैसे होना चाहिए? सर 5500 रुपए से 6000 रुपए की रेंज पे हम लोग आ गए हैं। 5500 to 6000 रुपीज पर टन एबिटा के लेवल पे हम आ गए हैं। उस तरह का सेगमेंट हमने अपना क्रिएट कर लिया है। ठीक है सर। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि बाकी का जो नॉन एपीआई ग्रेड ईआरडब्ल्यू सेगमेंट है, हमारे ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटर्स अपनी कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहे हैं, बट हमने अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा लमसम कैपेसिटी अनाउंस नहीं किया है। अब जब डेट इश्यूज लार्जली रिजॉल्व है, तो क्या हम देख रहे हैं कि हम भी अपनी कैपेसिटी यहाँ पे आधा या 1 मिलियन टन से बढ़ाएं?
तो आप कैसे देखते हैं ये सेगमेंट? हम एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के अंदर में सभी जगह जो है करीब 20% से कैपेसिटी अपनी इनहांस कर रहे हैं और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे आज बोर्ड में, लेकिन वो चर्चा डिस्कशन पूरा हुआ नहीं उसके अंदर में, और बोर्ड ने कुछ काम करने के लिए बताया है। सो एक नया प्रोजेक्ट जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में फर्दर हम उसको एड ऑन करेंगे, उसके कारण जो है हमारी मतलब सब्सटेंशियल जो है कैपेसिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो वो हमारे प्लान में है। जैसा मैंने बताया ना, हमको ग्रोथ और जो है कैपेसिटी एनहांसमेंट में काम करना है और शेयर होल्डर के लिए काम करना है। बैंक का काम हो गया खत्म। ठीक है सर। तो सर इसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अब बैंक का काम खत्म है, तो आपका जो कैश आएगा, मान लीजिए आप 100 रुपया कमाते हो, तो इसका बंटवारा आप कैसे करने वाले हो? कि कैपेक्स में कितना डालोगे, शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड कितना रिटर्न करोगे, इसमें कुछ आपके थॉट प्रोसेस? देखिए, हम लोग करीब ऐसा मान लीजिए आधा तो हम लोग अगले 2-3 साल तक हम लोग जो रोड में थे उसके हिसाब से हम लोग कैपेक्स करेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय तक ऑलमोस्ट 10 साल तक कोई बड़ा जो है कैपेक्स हमने किया नहीं है। छोटे मोटे जरूर ऑनगोइंग प्रोसेस में हम करते रहे हैं, और बाकी का जो है वॉल्यूम ग्रोथ होने का तो कुछ हमारे को वर्किंग कैपिटल और उन सब में भी लगेगा, और बाकी हम लोग कोशिश यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट शेयर होल्डर के मिले, क्योंकि कंपनी में आपके ही पैसे लगे हैं और कंपनी अच्छा करती है तो वो आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसके लिए मैं बैठा हूँ। जी सर। सर जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन, जो आप कैपेसिटी एनहांसमेंट का बोल रहे हो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो कौन से प्रोडक्ट कैटेगरीज हम देख रहे हैं? देखिए, हम लोग एक तो जो स्टील पाइप सेगमेंट है उसके अंदर में हमारा फोकस रहेगा एक्सपोर्ट और एपीआई बिजनेस, क्योंकि 10,000 किलोमीटर का जो है टारगेट अभी तक गवर्नमेंट ने उसको पूरा किया है, बट उससे कई गुना अभी जो है कैपेसिटी हिंदुस्तान में इंस्टॉल होनी है। और दूसरा जो है अभी जो इस साल के बजट में 11 लाख करोड़ रुपए का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ने, उसका जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है सारे सेगमेंट सारी इंडस्ट्री को उसको मिलेगा, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में चाय समोसा बेचने वाले को भी इसका फायदा मिलेगा। और पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने 44 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कैपेक्स में किया है, जो जब दुनिया में कोविड की वजह से लोग प्रिंटिंग मशीन और कैश बांटने में लगे थे, तब भारत सरकार उन दिनों जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहांस करने में लग रही थी। उसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ दिखती है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ रहा है, पीएलआई का एडवांटेज आ रहा है, और जिसकी वजह से हमारे जो टायर 1 सिटी के अंदर में जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो ग्रेजुअली टायर 2 टायर 3 में जा रहे हैं, चाहे वो नए घर हो, चाहे हाईवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो। सो ये हमारे फोकस रेंज में रहेगा। ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स और लाइटिंग उसके साथ ही कनेक्टेड है, ये हमारा है। और लाइटिंग में जरूर हमारी टीम उस पर काम करे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कुछ नए प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के ऊपर में, सेगमेंट के ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं, जो होपफुली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक हम लोग जो है वो शेयर होल्डर को शेयर कर पाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। Thank you. Next question is from the line of Manish Bhandari from Valium Capital Advisors. Please go ahead. हेलो। या मनीष जी। हाय गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन एक्सपोर्ट के बारे में है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने आपकी कंपनी को डेट फ्री होते देखा है, जो आपकी बहुत टाइम से एक विश लिस्ट थी। मेरा क्वेश्चन सर एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में है। आप लोग मिडिल ईस्ट के शुरू से ही बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, तो डू यू हैव अ स्ट्रैटेजी, कोई बहुत कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट का परसेंटेज सब्सटेंशियली बढ़ाया जा सकता है मिडिल ईस्ट में, जहाँ पे बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन बूम आया है? आपने कुछ उस बारे में कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, और अगले 2 साल तक कुछ हमें विजिबिलिटी नजर आती है? क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक पे भी चलता है, तो इफ यू कैन शेयर दी ऑर्डर बुक ऑल्सो ऑफ द एक्सपोर्ट। सो ऐसा कि देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर में सऊदी एक बहुत पोटेंशियल, हाईली पोटेंशियल एरिया बन के उभरा है अभी, फॉलोड बाय इजिप्ट, और जो है हमारा, जैसे आपने पॉकेट बताया, मिडिल ईस्ट में तो हम स्ट्रॉन्ग नंबर 1 है ही। इसी तरह से यूरोप
और अभी कनाडा सब्सटेंशियली जो है हमारा मार्केट शेयर इम्प्रूव हुआ है, और साथ ही जो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सो ये 4 हमारे जो एरिया मतलब जगह है, इन पे हमारा फोकस है, और हम लोग इक्वली जो है मतलब कंट्रीब्यूशन चारों जगह से बराबर आता है। तो मेनली अब हमने ये जो इजिप्ट और इन देशों में फोकस कर रहे हैं, वो तो स्पेशल प्रोडक्ट एपीआई और उन सब में है, और सऊदी के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, और हमारा जो है कंस्ट्रक्शन पे यूरोप और यूके वो सेगमेंट है, और सिमिलरली जो है आपका फायर फाइटिंग सेगमेंट और कंस्ट्रक्शन और जो फेंसिंग का सेगमेंट होता है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है। कनाडा के अंदर में डीएफटी का हमारा कई सारे प्रोडक्ट रेंज अप्रूव हुए हैं, सो अब वो एक नया एरिया हमारे लिए खुल रहा है, क्योंकि हमारे पास पहले वो सेगमेंट जो है डीएफटी का सेक्शन स्ट्रक्चरल पाइप बनाने की फैसिलिटी नहीं थी, उसके कारण वो कनाडा इम्प्रूव हो रहा है। सो मुझे लगता है काफी पोटेंशियल है एक्सपोर्ट के अंदर में, और हम लोग काफी साल से काम कर रहे हैं। सूर्या का नाम बहुत बड़ा है, मुझे खुद एमडी हुए आज 12-13 साल हो गए, लेकिन मुझे याद नहीं आज तक किसी को हमने 1 रुपए क्लेम जो है मतलब दिया हो कभी। बट हम लोग बहुत प्रिकॉशन भी लेते हैं, क्वालिटी फ्रंट और सर्विस फ्रंट से लेकर के बाकी और चीजों डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के, और इवन पेमेंट टर्म्स में भी हमारा सारा जो है या तो एडवांस में पेमेंट पे जाता है या एलसी के इवेंट्स में मटेरियल जाता है। राजू जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन है रिलेटेड टू दी 2 एक्सपेंशन व्हिच यू स्पोक अबाउट, नॉट इनटू दी वेस्टर्न रीजन, बट जो बाकी 2 एक्सपेंशन के बाद, उसके ऊपर आप थोड़ा और डिटेल में बता पाएंगे कि उनकी प्रोडक्ट रेंजेस में आपको चेंज करेंगे? अब जो आप जो एक्सपेंशन करने वाले भले वो वेस्टर्न रीजन में हो, तो उसमें प्रोडक्ट सिर्फ हाई मार्जिन वाली प्रोडक्ट करेंगे, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज हुआ है कंपनी में? ऐसा है, नंबर 1 तो थोड़ा सा आपको नया लगेगा, फर्स्ट टाइम मैं कोल्ड रोलिंग की बात कर रहा हूँ। हमारी कोल्ड रोलिंग की जो है फैसिलिटी जो है वो बहुत 10 साल से हमने उसमें कुछ किया नहीं, और करीब 1 लाख टन की हमारी कैपेसिटी कोल्ड रोलिंग की है, 90,000 से 1 लाख एनुअली। सो उसके अंदर में हम लोग 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑलरेडी प्लांट मशीनरी और वो सब में काम हो गया, तो 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हमारा वॉल्यूम जो है आज 8,000 टन जो एवरेज है, बढ़ के हमारा 12,000 टन की कैपेसिटी हो जाएगी 60 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से। और उसमें हो ये रहा था कि इन्वेस्टमेंट नहीं आने के कारण, और हम क्वालिटी से भी ग्रेजुअली आउट हो रहे थे, जो बेसिकली ये ऑटोमोबाइल सेगमेंट वगैरह और फैन और इन सब इंडस्ट्री के अंदर में, तो हमको ये करना पड़ा, क्योंकि बहादुरगढ़ अभी भी चल रहा है और कैश जनरेट कर रहा है वो मतलब प्लांट। तो एक छोटा हमने कैपेसिटी मतलब छोटा इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छी कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है, और हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। ओवरऑल कॉस्ट में भी जो इसके कारण इम्प्रूवमेंट आएगा, और हम ऐसा मानते हैं 2 से 2.5 साल के अंदर में इसका पेबैक भी निकल कर आएगा। वहाँ कैपेसिटी बढ़ रहा है। दूसरा जो है, ग्वालियर के अंदर में अभी तक हम राउंड पाइप एंड सेक्शन स्ट्रक्चरल पाइप ही बनाते थे। हमने ऐसा देखा देश भर में वाटर पाइप के बहुत सारे ऑर्डर हैं, और अभी सिंगल एक 15,000 टन का वाटर पाइप का ऑर्डर भी हमको मिला है। सो मिड इंडिया में क्योंकि अंजार से कैटर करना या बहुत दूर मतलब कॉस्ट बहुत बड़ा इशू आ जाता है, तो एक 20-22 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से हमने एक स्पाइरल प्लांट वहाँ पे लगाया है, दैट विल बी मेनली फॉर वाटर पाइप सेगमेंट ओनली। सो सिमिलरली एक कोटिंग प्लांट के ऊपर में जो है इन्वेस्टमेंट हमने किया है, मॉडिफिकेशन किया है। पहले साइज छोटी थी, अब ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। तो ये 100-125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी प्रोसेस में है। इससे जो है हमारी ओवरऑल कैपेसिटी जो है तीनों फैक्ट्री में कुछ बढ़ जाएगी, और एक नया मिल जो है हिंदुपुर प्लांट में आ रहा है, और बहादुरगढ़ में भी एक और मिल हम लोग 2.5 से 8 इंच की मिल जिसमें 15-20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होएगा। तो ऐसा 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से आप मान के चलिए हमारी कैपेसिटी जो है मुझे लगता है हमारा करीब 2 लाख टन के आसपास रहेगा, 15 से 20%। और एक सब्सटेंशियल जो है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है हम लोग वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में करेंगे। होपफुली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में उसको हम अनाउंस करेंगे।
तो राजू जी सब्सटेंशियल मतलब कि 200 से 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट साइजेबल? हाँ 250 से 300, यस यू आर राइट। तो उससे आपके लॉजिस्टिक कॉस्ट पे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी आप बहादुरगढ़ और हिंदूपुर से वेस्टर्न रीजन में देते होंगे माल। नहीं वो भी है, दूसरा 2 लाख टन यानी एनुअली आप 25 लाख टन का मार्केट हमारे रेंज से बाहर है, उसको हम कैटर नहीं कर पा रहे हैं। आज हम लोग बहादुरगढ़ से 1000 टन 2000 टन माल बेच पाते हैं और उसमें भी हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे बेचते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है। तो वहाँ रहने से बड़ा मार्केट है महाराष्ट्र और सराउंडिंग में, और वहाँ से जो है मतलब लाइक राइट अप टू द बॉर्डर ऑफ कर्नाटक तक आप पहुँच सकते हैं, और वहाँ से एक्सपोर्ट भी फिजिबल है, और एपीआई के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये फिजिबिलिटी भी वहाँ से मतलब पार्क और बेटर लोकेशन बन जाता है, तो वो हम एक प्लान कर रहे हैं। माय लास्ट क्वेश्चन राजू जी, कि आज हमारे प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग दी गवर्नमेंट टेंडर बिजनेस कहाँ प्रीमियम पे चलते होंगे और कितना प्रीमियम पे चलते होंगे? अच्छा, एक तो गवर्नमेंट सरकारी तो हम कुछ करते ही नहीं है, जो भी है पीएसयू में जाता है हमारा मटेरियल, और उसके अलावा जो प्रीमियम सेगमेंट है वो एक्सपोर्ट के अंदर में भी मतलब एक गैल्वेनाइजिंग अपने आप में प्रीमियम है ही, लेकिन उसके अलावा भी एक्सपोर्ट के अंदर में भी करीब 20% मटेरियल हमारा ऐसा जाता है, वो उसमें और वैल्यू एडिशन हम लोग करके बेचते हैं, क्योंकि उनके यहाँ वैल्यू एडिशन डॉलर में होता है, हमारे यहाँ रुपीज में हो जाता है। सो हमको भी उसमें मार्जिन बेटर मिलते हैं, और जो हमारा रिसीवर ग्राहक है कस्टमर है उसके लिए भी एडवांटेज होता है एक। और नंबर 2 जो है मतलब हमारा ओवरऑल जीआई तो है ही, और कुछ ऐसे स्पेशल साइज जो कंपटीशन नहीं बनाता, उसमें एक मार्केट में एक हमको एक एडवांटेज उसका मिलता है। सो ऑयल एंड गैस सेगमेंट आपको पता है ही, वो उसके अंदर में बहुत स्पेशल प्रोडक्ट होता है, और हाईली जो है इंजीनियरिंग और कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक सेगमेंट हमारा है। सो लार्ज डाया एपीआई एक्सपोर्ट एंड गैल्वेनाइजिंग के अंदर में आज भी हम हिंदुस्तान में नंबर 1 है, और बहुत सारे स्टेट के अंदर में हमारी प्राइस डिफरेंस 8 से 10-15% तक रहता है कंपटीशन के कंपैरिजन में। 10% in a business like pipe, isn't it too high? मतलब इतना 8 या 5% प्रीमियम लेना वर्सेस द कंपटीशन इज टू हाई अ नंबर। है वो है, मैं आपको फिजिकली भी दिखा सकता हूँ वो है, और उसके लिए हमने बहुत मेहनत की। हमारा मार्केट सेगमेंट 40 साल बाद जाकर के उस स्टेज में हम लोग पहुंचे हैं, और वो 10-12 पहले तो ये 17-18-20% तक भी होता था, 10 से 15 की रेंज में आज भी मिलेगा। थैंक यू टू होल टीम। थैंक यू राजू जी। Thank you. A reminder to all participants, you may press star and 1 to ask questions. Next question is from the line of Naveen Bait from Nuvama Asset Management. Please go ahead. Thank you. Actually, my question has been answered. Thank you. Thank you. A reminder to all participants, you may press star and 1 to ask questions. Next question is from the line of Sanjay Nandi from VT Capital. Please go ahead. Hello. Yes, sir. Yes, please. Yes, please. Yeah. Can you hear me? Yes, yes. Like in the ERW segment, we are having like 80% of the sale. So whom we are competing with these other peers in this particular segment? Will you please repeat it again? Yeah. In the ERW segment, who are our main peers that we are competing with? So मतलब एपीएल अपोलो है, और जिंदल है, कुछ हद तक टाटा भी है। सो ऐसे 4-5 कंपनियां हैं जो अच्छी क्वांटिटी में जो है अच्छे वॉल्यूम करते हैं। Right. So what kind of EBITDA margin differential do we have compared to its peers? Like Maharashtra Seamless also posted some good numbers in EBITDA pattern front in this quarter in the ERW segment. And like what you have mentioned in the call in the previous, like we are having some degrowth in the volume front, and also the ship segment also not doing well. So where we are lagging, sir, exactly compared to our peers? ऐसा है कि हमारे जो जैसे महाराष्ट्र सिमलेस बोले वो टुगेदर डिफरेंट सेगमेंट है, वो सिमलेस पाइप में है, और जो है हम लोग ERW और स्पाइरल सेगमेंट पे है। सो वो ज्यादा एक्सपोर्ट बेस है, तो उनसे तो कंपैरिजन नहीं बनता।
बट हमारे जो पीयर जिनके मैंने नाम लिया आप उनसे कंपेयर करेंगे तो उससे काफी सब्सटेंशियल बेटर है, यानी 20% तक हमारा परसेंट EBITDA ज्यादा है। अगर पर्टिकुलरली Q3 की भी मैं बात करूं तो हम लोग के EBITDA % ERW में कितना होगा सर अपनी? ERW सेगमेंट में हमारा करीब 6,000 रुपया है, 6,100 कुछ रुपया इस क्वार्टर का भी है। और कंपटीशन में आप देखेंगे रेंज बिटवीन 4,500 to 5,000 रुपीज के रेंज में है। ओके सर, थैंक यू सर। आपको स्पेसिफिक एक आपने जो पूछा, अगर मैं इसमें भी हमारा पाइप सेगमेंट में, क्योंकि कोल्ड रोलिंग में हमारा EBITDA पर टन मार्जिन बहुत कम है, तो मैं उस सेगमेंट को अगर हटा दूं तो आज भी हमारा 6,800 रुपया पर टन EBITDA है ऑन पाइप सेगमेंट ओनली। तो सर ये कोल्ड रोलिंग सेगमेंट कितना होगा हम लोग का टोटल ERW स्पेस में? करीब मतलब 90,000 टन की कैपेसिटी एनुअली, तो करीब 11% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में इसका। मतलब ERW स्पेस में इतना सेल्स का 11% कोल्ड रोलिंग का है? हाँ, टोटल 100% जो स्टील सेगमेंट है हमारा, उससे 11% कंट्रीब्यूशन कोल्ड रोलिंग का है, स्ट्रिप सेगमेंट का है। इसमें भी हम लोग मार्जिन इंप्रूव करने के लिए कुछ क्वालिटी, कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं। ओके। What kind of guidance can we presume in the coming years, like on a long-term basis, like in the ERW segment? सी ओवरऑल जैसा मैंने बताया कि हम लोग होपफुली इस साल जो है हमारा We are talking of 6,000 rupees per ton, right? This is for the entire company or for the ERW segment as a whole? So कंपनी एज ए होल करीब हम लोग 7,800 से 8,000 के रेंज का हमारा रेवेन्यू रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर में, और 600 करोड़ से लेकर के 610 करोड़ की रेंज में हमारा EBITDA कंपनी एज ए होल ओवरऑल रहेगा। और नेक्स्ट ईयर हम ऐसा मानते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, करीब 14-15% की ग्रोथ स्टील डिवीजन में रहेगी और 15% से ज्यादा की ग्रोथ लाइटिंग डिवीजन कंज्यूमर सेगमेंट में देखने को मिलेगा। सो इस साल अगर हम 8,000 करोड़ के आसपास की रेंज बाउंड में रहते हैं, 7,800 से 8,000, तो फुली अगले साल हम लोग 9,500 के रेंज के आसपास रहेंगे। As for the lighting, so what kind of margins can we expect once we got the EMD license and so what kind of margins can we expect in the lighting? लाइटिंग में अच्छा, आपने लाइटिंग में पूछा क्या है। लाइटिंग में पिछले 3-4 साल बहुत डिफिकल्ट रहे, ये नए कैटेगरी के कारण, और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत हावी रहा। फ्रिक्वेंटली जो है प्रोडक्ट चेंज होते रहे, प्राइस इरोजन होता रहा, और स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी ज्यादा हावी रहा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड R&D इनोवेशन। तो एज ए रिजल्ट इसके कारण लाइटिंग इंडस्ट्री को काफी दिक्कत रही। बट फिर भी मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कॉम्पिटिशन के मुकाबले हमारे परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही। मतलब हमने 20% हमारी स्कीम को रिड्यूस करके प्राइसिंग का हिस्सा बनाया, उसके बावजूद भी हमने अपनी रेवेन्यू को मेंटेन रखा है। रादर पिछले 9 महीने में 4-5% की ग्रोथ है रेवेन्यू में, और वॉल्यूम में आप अगर देखेंगे वही आपको 25% से ग्रोथ दिखेगा। नंबर 2 मार्जिन्स के अंदर में, जहाँ पे आप देखिए पिछले साल हमारा ओवरऑल जो है पूरे एनुअल बेसिस पे 7.9 यानी 8% था एनुअल बेसिस पे, और Q1 में हमारी 8.33 थी इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में। Q2 में इम्प्रूव होकर 9.21% रही। Q3 में जो अभी जिस क्वार्टर की हम डिस्कशन कर रहे हैं 9.33 रहा, और Q4 के अंदर में ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये हायर सेल और अच्छा साल रहता है, क्वार्टर रहता है, तो वो डबल डिजिट यानी करीब 10% से ऊपर रहेगी। तो एनुअल बेसिस पे जहाँ पहले 7.8% था यानी 8%, उससे इम्प्रूव होकर 9.5% होगी, और अगले साल ऐसा हम मानते हैं 15% ग्रोथ के साथ जो है 20% जो है EBITDA में इम्प्रूवमेंट दिखेगा लाइटिंग। ओके सर, इस लाइटिंग स्पेस जैसे कि ये इतना मतलब डायनामिक है, लाइक एवरी ईयर लाइटिंग टेक्नोलॉजी गेट्स चेंज, मतलब सबको नया वैरायटी चाहिए इन द लाइटिंग स्पेस। सो हाउ कंफर्टेबल वी आर इन लाइक कंबैटिंग विद दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन लाइटिंग स्पेस? ये लाइटिंग और कपड़े का धंधा एक जैसा ही है, हर दिन नया चाहिए आपके। ठीक है। तो आज जो होगा सर अगला साल वो मतलब हो जाएगा। एडवांटेज है
हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ये एक हमारी सूर्य रोशनी की स्ट्रेंथ है। हम बाहर से बना करके ठप्पा नहीं लगाते। तो हम मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो वो मार्जिन्स हमको जो है दूसरों को देना नहीं पड़ता। दूसरा R&D और इनोवेशन हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम है। स्केल की वजह से हमको रॉ मटेरियल के अंदर में भी काफी सब्सटेंशियल एडवांटेज मिल जाता है। तो इसलिए मतलब ठीक है, जैसा मैंने बताया देश बड़ा है, कंपटीशन हाई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम लोग कंटिन्यूसली पिछले 50 साल से परफॉर्म करते आ रहे हैं। यही सूर्य रोशनी की ट्रैक रिकॉर्ड है। And sir, what kind of products are we thinking of exporting to Middle East countries? मतलब कौन सा लाइट हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे? तो लाइटिंग के अंदर में हम लोग एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि हमको पता है जहाँ चाइना बैठा हो और चाइना एक्सपोर्ट कर रहा हो और उसको फ्री मूवमेंट मिला हो, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट करके ट्राई करना कोई मतलब हम समझते हैं वो बेकार में टाइम वेस्ट वाली बात है। तो हमारा क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट का साइज भी बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान का 30,000 करोड़ की आज सेगमेंट हो गई लाइटिंग की। सो हमारा फोकस डोमेस्टिक में रहता है, और जो हमारी कैपेसिटी है उसमें कुछ मटेरियल ऐसा है जो हम ज्यादा बना सकते हैं, तो हम लोग कुछ अच्छी कंपनियों को ब्रांडिंग करके बहुत थोड़ा, हार्डली मुझे लगता है 3-4% ओवरऑल रेवेन्यू का हम लोग एनुअल बेसिस पे वो भी करते हैं। समझ गया सर, समझ गया सर। So thank you for answering all these questions that you are having. I'll come back later. Thank you. Next question is from the line of Shweta Dikshit from Systematics Group. Please go ahead. Hi, congratulations sir on a good set of numbers, and thank you for the opportunity. Sir, I wanted to understand कि export का proportion as a export share as a proportion of sales, how is that? मतलब आप कह रहे हो कि you're targeting in Canada, Australia, New Zealand नए segments पे भी focus है. Then how are this proportion expected? Is it expected to change in the next 2 years? Are you targeting a growth? And second follow-up regarding the exports is, I think I missed the realization number, EBITDA per ton number for the exports. वो कितना रहता है? एक ballpark number अगर आप दे पाओ तो। So, जैसा आपने बताया कि मतलब हमारा टारगेट एक्सपोर्ट का अभी हम लोग 19-20% रेंज पे रहते हैं। एक्सपोर्ट हमारा ओवरऑल रेवेन्यू का हिस्सा। सो हमारा, मुझे ऐसा लगता है एक्सपोर्ट सेगमेंट हमारा बढ़ करके करीब 24-25% के आसपास रहेगा, और EBITDA में कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट मार्केट का अच्छा रहता है, क्योंकि आपको बहुत सारे अप्रूवल चाहिए होते हैं और बहुत सारे सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, और एक्सपोर्ट वाले थोड़ा बेटर प्राइस देके भी क्वालिटी प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, जिसके लिए सूर्य रोशनी जानी जाती है। सो हमारा अभी रेंज रहता है, मतलब डिफरेंट मार्केट में 7,000 से लेकर के 12,000 की रेंज रहती है। तो एवरेज में हम लोग 9 से 10,000 का % EBITDA ओवरऑल एक्सपोर्ट क्वांटिटी से आ जाता है। Okay, thank you sir. जी, फिनिश। Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question of the day. I now hand the conference over to Mr. B.P. Singhal for closing comments. For joining us today on this earnings call. We appreciate your interest in Surya Roshni Limited. I sincerely once again thank you, our MD sir, Executive Director and the CEOs for sparing their valuable time and addressing queries raised by the participants who attended the call. For any further queries, if any, contact SGA, our investor relation advisor. Thank you. Good evening. Thank you very much. Thank you. On behalf of Surya Roshni Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.